माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग कोलॉइड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसा मिक्सचर जिसका पार्टिकल साइज 10⁻³ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच हो, वह मिक्सचर हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 10⁻³ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, जबकि कोलॉइड का पार्टिकल साइज 10⁻⁵ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। आज हम लोग कोलॉइड्स का डिटेल स्टडी करने वाले हैं। किसी भी सॉल्यूशन में आप जानते हो कि सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने से सॉल्यूशन तैयार होता है। इसी तरीके से कोलॉइड में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज वहाँ सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट की तरह कोलॉइड में प्रेजेंट होता है। द फेज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड द medium in which dispersed phase particles are present is called dispersion medium. Water is dispersion medium in hydrosol. In benzosol, benzene is dispersion medium. In alcohol, alcohol is dispersion medium. So dispersion medium behaves like solvent in colloid. Now we will study the classification of colloids. On the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium, colloids are classified into four major parts. One is called sol, second one is gel, third one is aerosol, and fourth one is emulsion. So sol, aerosol, gel and emulsion are the colloids. These are the colloids based on physical state of dispersed phase and dispersion medium. In CBSE 12 exam, this has been asked many times. Let us study about the sol, aerosol, gel and emulsion in detail. Sol is a colloid in which dispersed phase is solid and dispersion medium is solid or liquid. For example, paints, cell fluids is solid in liquid, gemstones, pumice stone, etc. So these are the example of sols. Aerosols, the dispersed phase is solid or liquid and dispersion medium is gas. This type of colloid is called aerosol. You know, dust particle in air is an example of aerosol. Spray is an example of aerosol. Perfumes, spray, dust particle in air, these are the examples of aerosols. Now we will study gels, the colloid in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. It is called gel. Boot polish, butter, jellies are the common gels. You might have eaten Kisan jam is an example of gel. Now we will study emulsion. Emulsion is a kind of colloid in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid. So liquid in liquid is called emulsion. Milk is an emulsion. Even cold cream, vanishing cream are the emulsion. We can conclude that the colloid whose particle size is 10⁻⁵ to 10⁻⁷ centimeter is a heterogeneous mixture, and on the basis of dispersed phase
physical state of dispersed phase and dispersion medium. Colloids behaves like sol, aerosol, gel and emulsion. So these are the four categories of colloids. In the previous class, I think you have studied the different properties of colloids like Tyndall effect, electrophoresis, Brownian movement, etc. Okay, all the best. God bless you. Be happy. Be safe.